Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing well. Today we are doing a live session on balancing and how to focus and bring in more productivity to your life. आज के हमारे सेशन में हमारे साथ हैं ज़ौफिशा हसन, who is a trainer, life coach, and also managing partner of Fintech Solution. So thank you so much Zaufyshan for giving us the time. हम इनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग अपने टाइम को बेहतर बना सकते हैं by managing our time better, by having more productivity in life, and also by focusing more clearly. So Ms. Zaufyshan, हम स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन से कि किस तरह से लाइफ में हम क्लटर को दूर कर सकते हैं और ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं. हाउ कैन वी फोकस बेटर? सॉरी, रिपीट थोड़ा सा कीजिए. आई एम सॉरी, कई दफा आवाज कट हो जाती है. आप दोबारा बताएंगे? देखो, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन पीपल फोकस मोर इफेक्टिवली एंड लीव आउट ऑल द क्लटर जो इर्द गिर्द होते हैं. एक तो ये बात है कि क्लटर इस जिंदगी का जो आज हम 2021 में आ गए हैं, it is a part and parcel of our life, and it is a part and parcel of the youngsters that are there as well. आपके millennials हो गए, आपके Gen Z हो गए, वो इसी चीज में ग्रो किए हैं and they are very comfortable with that. So इस वक्त जो है एक डायकोटमी चल रही है दो डिफरेंट जनरेशंस की. एक हमारी जनरेशन है जिनको हमारी मदर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे फादर्स ने इस तरह से ट्रेन किया हुआ था, थोड़ा सा ज्यादा डिसिप्लिन किया हुआ था. बाय द टाइम वी बिकेम पेरेंट्स, हमने थोड़ी सी ईज दे दी कि हम भी इतना वो करते होते थे, एंड यू नो, सो देन इट नाउ स्पेशली द यंगस्टर्स, दे बिलीव इट टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ. वो अपसेट हो जाते हैं जब बहुत ज्यादा क्लटर हो जाता है, बट क्लटर सिर्फ फिजिकल थिंग्स में नहीं है, माइंड में भी बहुत सारा क्लटर है. और ये जैसे स्ट्रेस को कहा जाता था 20th सेंचुरी डिजीज, इस तरह मैं आपसे ये कहूंगी कि जो डिस्ट्रैक्शन है और ये जो क्लटर है, इसको हम 21st सेंचुरी की एक डिजीज कहा जा सकता है. क्लटर को परे करने के लिए दो लेवल्स पे करने हैं और दोनों के लिए प्लानिंग चाहिए. पहले कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, बिकॉज फिजिकल वर्ल्ड का क्लटर जो है वो क्लियर करने में ईजियर रहता है rather than mental clutter की, क्योंकि हमने आज throughout इसी टॉक में ये बात करनी है, तो it takes a while, so you have to plan it. बहुत दफा बच्चे कहते हैं कि you know mom, ये होने वाला है, वो होने वाला है, तो you have to start somewhere. So planning is the thing, not only in your personal life but also in your professional life. Whenever there is a kind of a clutter, you have to get things done. जिनके पुराने ऑफिसेज हो जाते हैं, जो और ऑफिसेज और फाइलों के थद्दे वो स्पेशली फाइनेंस के डिपार्टमेंट के अंदर तो आप जाओ, इतनी फाइल्स होती हैं, और वो दे कॉज मोर क्लटर इन द माइंड एज वेल, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं है. सिर्फ जिस इंसान ने रखी है उसको मालूम है कि कैसे करना है. सो द वे टू इट इज दैट यू स्टार्ट प्लानिंग. कहते हैं कि हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट, वन बाइट एट अ टाइम. सो छोटा छोटा करके जो क्लटर है जिंदगी में, स्टार्ट विद योर बेड साइड टेबल, स्टार्ट विद योर ऑफिस स्पेस, द लेफ्ट ड्रॉर, एक्सेट्रा. फिर सबसे बड़ी जो माइंड का क्लटर है उसके लिए है, एंड आई बी बाय द वे ऑल द व्यूअर्स हु हैव जॉइंड इन, आई विल आल्सो बी टॉकिंग, गिविंग यू सम रिकमेंडेशंस एंड सम टिप्स अबाउट दैट. बट सबसे बड़ा माइंड का क्लटर को दूर करने के लिए है कि हम टेक्नोलॉजी से जरा थोड़ी सी ब्रेक ले लिया है. हमारी टेक्नोलॉजी सारा वक्त पिंग्स एंड पॉन्ग्स एंड नोटिफिकेशंस, एंड दूसरी तरफ हमारे फिजिकल वर्ल्ड में इफ वी आर वर्किंग इन एन ऑफिस, डोर नॉक हो रहा है, फोन बज रहा है, सो वी नीड टू टेक अ ब्रेक. समटाइम्स इफ वी आर लुकिंग आफ्टर द फिजिकल क्लटर, थोड़ी देर फोन को साइड पे रख दिया जाए, बंद कर दिया जाए, कुछ नहीं होगा, जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी अगर थोड़ी देर के लिए हम टेक्नोलॉजी से कट ऑफ हो जाएंगे. मेंटल क्लटर को करने के लिए नेगेटिव पीपल, टॉक्सिक पीपल, उनको अवॉइड अगर कर लें, कुछ देर के लिए निकाल नहीं सकते हैं, स्पेशली पर्सनल लाइफ में तो बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते हैं. सो इस वजह से हेडफोन्स में इन्वेस्ट कर लें ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो, मेंटल क्लटर में हेल्प करे. स्क्रीन टाइम्स मैंने पहले ही कहा, रेजिस्ट करें टेम्पटेशन. अभी
अभी 1 घंटा हम बात कर रहे होंगे, सबसे पहले मैं या आप क्या करेंगे, आयशा विल पिक अप आवर फोन एंड से कि कोई मैसेज तो नहीं आया. वी आर एक बड़ी अच्छी कोट है दैट द ग्रेवयार्ड इज फिल्ड विद इंडिस्पेंसिबल पीपल. हर कोई समझता है कि उनके बगैर जो है वो दुनिया ही खत्म हो जाएगी. नो, दैट्स नॉट ट्रू. आई मीन वी आर इम्पोर्टेंट, ईच एंड एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन थोड़ा सा जरा ब्रेक अपने आप को भी दें. और स्क्रीन टाइम पे जब हम कह रहे हैं कि टाइम आप अपना कम कर दीजिए, तो उसके लिए एक सोशल मीडिया का भी गोल्स आप बनाएं कि कितनी देर करना है. आप बनाएंगे, द पीपल अराउंड यू विल आल्सो जॉइन इन बिकॉज दे विल सी कि आपके स्ट्रेस लेवल्स कितने वो है. दूसरा ये है कि मेंटल क्लटर को खत्म करने के लिए सुबह जब हम ड्राइव करके, आजकल तो फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम है बट ऑफिस जा रहे होते हैं, तो कोई डिफरेंट रूट ले लें जो हमें चीजें दिखी नहीं है. थोड़ा सा बाहर अपने आप को रिलैक्स करें, उन चीजों पे फोकस करें, डी क्लटर करें कि आपके माइंड में क्या क्या है. बिल्कुल. एंड आई थिंक ये लास्ट जो आपने स्ट्रैटेजी बताई है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि हम लोग की वर्क स्पेस से निकल के भी कॉन्स्टेंट फोन में होते हैं. बाय द टाइम रीच होम हमने कहीं बाहर नहीं देखा होता है. वी आर आइदर लुकिंग ऑन आवर फोन या फिर हम सीधी सड़क को देख रहे होते हैं. सो दैट्स समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर एंड जस्ट टेक आउट टाइम टू सी थिंग्स अराउंड अस कि क्या हो रहा है बाहर. बल्कि एक बात मैं यहाँ और ऐड करना चाहूंगी आयशा, कि वहाँ दुबई में जब हम होते थे तो वहाँ वो डांसिंग फाउंटेन्स हैं दुबई मॉल में, और वो ना, तो जितने लोग उधर खड़े हुए होते थे ना, वो सब फोन से वीडियो ले रहे होते थे. वीडियो के थ्रू वो देख रहे हैं, और जो एक्चुअल सीन है, सेम एट ऑल द ब्यूटीफुल प्लेसेस. यहाँ मरी में लोग आ रहे होते हैं, भूरबन में आ रहे होते हैं, they don't enjoy, they are on the cameras. Enjoy the beauty and be with nature. Very true, very true. So that's something that really needs to be added to our routines. The second question that I want to ask you is, how can people distinguish important things from unimportant things? Because कभी-कभी बहुत सारी चीजों में it gets difficult to identify the importance of everything. जब मैं अपनी टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स करा रही होती हूँ ना, उसके अंदर एक्सटेंसिव टाइम हम टास्क को डिवाइड करने में करते हैं, और रादर देन सिर्फ इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट तो टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट इज इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट. इसमें लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं. सब अर्जेंट चीजें इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, और सब इम्पोर्टेंट चीजें अर्जेंट नहीं होती हैं. और वो सब वी ओनली कैन रियलाइज इफ वी प्रायोरिटाइज आवर टास्क्स. लिख दें कि ये इम्पोर्टेंट है तो उसको पहले करना है, अगर वो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है. अगर इम्पोर्टेंट और नॉन अर्जेंट है तो उसको बाद में करना है. सबसे पहले मैंने आपसे यही किया कि एवरीथिंग कम्स डाउन टू प्लानिंग, और प्लानिंग की हमें आदत नहीं है. हमारा कल्चर भी जो है वो हमें प्लानर्स नहीं बनाता है, बिकॉज ऑल द प्लानिंग इज डन बाय द एडल्ट्स, और by the parents or somebody else, or by the teachers. So we are not given that power to start planning and making our own decisions. So coming back to that, हर task को अगर हम plan out कर लें, तो then we can have a balance between monotasking and multitasking as well. दूसरी ये बात है कि प्लानिंग के अंदर ये आ जाना चाहिए कि बिग टास्क कौन से हैं, स्मॉल टास्क कौन से हैं, सारे लिख लेने चाहिए. वी डोंट राइट डाउन आवर टास्क्स. पता है, इवन एट होम सुबह किसी ने कह दिया, या एट आवर वर्क प्लेसेस मोर सो, हम जाते हैं तो हमारे मैनेजर ने जो दे दिया, what falls in our lap, whatever comes through the email, we start working. We don't have a plan. So what does that mean? That when I don't have my plan, I work by other people's plans. Hence, ये सारे problems जो हैं वो आ जाते हैं. So write down, make your own list. 100 items लिख लें, उनको फिर prioritize कर लें कि पहला कौन सा करना है, and everything, each and everything. I have to clean up the fridge after I go back from work can be another task. It is not urgent, but it is important. So according to that, थोड़ा सा पहले अपने mind में, फिर on paper, we need to understand that how to prioritize our tasks. Yeah.
या बिल्कुल, एंड आपकी बात से एक और चीज मुझे समझ आई, दैट वी नीड टू स्पेंड टाइम ऑन एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या कर रहे हैं, रादर देन स्पेंडिंग टाइम ऑन डूइंग हार्ड वर्क ऑन थिंग्स जो आती जा रही हैं. वी नीड टू स्पेंड सम टाइम एंड थिंक एंड रिफ्लेक्ट कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किन चीजों को किस तरह से मैनेज करना है. बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल डोंट स्पेंड टाइम ऑन प्लानिंग ऑन व्हाट दे हैव टू डू, रादर दे स्पेंड टाइम ऑन डूइंग थिंग्स. सो उसमें जो है वो कंफ्यूजन, केओस क्रिएट हो जाते हैं. दैट्स एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक. Absolutely, absolutely. You said it. ठीक है. सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम बात करें, एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है टू बैलेंस लाइफ इज मल्टीटास्किंग. बहुत सारे लोग 3 4 6 चीजें इकट्ठे कर रहे होते हैं. एंड बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि जी हम एक चीज से ज्यादा काम एक वक्त में नहीं कर सकते. सो इस मल्टीटास्किंग का मिथ, क्या वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है, और क्या वो चीज हमारे हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती है? कैन इट मेक अस मोर प्रोडक्टिव? आयशा, हम दोनों जेंडर्स की बात कर रहे हैं या सिर्फ मेल जेंडर की बात कर रहे हैं या फीमेल की बात कर रहे हैं? आई थिंक लेट्स कीप इट फॉर मैं बोथ जेंडर्स. मैं इसलिए ये I was trying to make a joke actually that usually they say that women are better at multitasking and it is an evolutionary thing. हमारे genetics का form हो गया है through evolution because women were hunter gatherers. They needed to do juggle multiple responsibilities. Maybe they would go hunting as well, but they had kids. And when agricultural revolution came into being, उन्होंने अपनी fields का भी ख्याल करना है, kids का भी ख्याल करना है. So, you know, which is why it comes naturally to women. But let me say, हर कोई multitask करता है. Everybody does it. And by the way, our body also is multitasking. You know that. जो हमारा autonomous brain system है, उसके अंदर हमारा दिल धड़क रहा है, हम सांस ले रहे हैं, लेकिन जब हम deep breath लेते हैं, तो then we take over rather than it being an unconscious kind of a system going on in our brain. So everybody is actually multitasking. Myth nahi hai. We all do it. And as I said, in this fast-paced world, अब और ज़्यादा हमने शुरू कर दिया है multitasking. मजे की बात यह है कि अगर अभी भी लोगों को इस चीज में डाउट है कि वो मल्टीटास्किंग नहीं करते हैं, तो उन्हें कहें कि अभी जाके जब घर जाएंगे और नमाज पढ़ेंगे, उस वक्त जरा देखें. We cannot even have a focus while we are doing the most important thing of the day. So that is a clear indication that our brain takes us into different directions. Whether we are actually using multiple of our brain, parts of our brain or not, लेकिन हम मल्टीटास्क हर वक्त कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो बहुत हाई चले जाते हैं. So there needs to be a balance between multitasking and having a hyperfocus, या जिसको monotasking कहते हैं. सबसे पहले तो सॉरी आयशा, मल्टीटास्किंग होती क्या है? आपके ख्याल में है क्या? यू नो, या तो ये हो रहा है कि हम 2-3 टास्क साइमल्टेनियसली कर रहे हैं. मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम इस वक्त सामने मेरी स्क्रीन है, आई एम ऑल्सो कीपिंग इन माइंड के बारिश होने वाली है. दूसरा मल्टीटास्किंग है कि स्विचिंग बैक एंड फोर्थ बिटवीन टास्क्स, और ये सबसे ज्यादा हमारे स्ट्रेस लेवल्स को हाई करता है. और या ये है कि परफॉर्मिंग tasks in a rapid succession, one after the other, churning out tasks actually. लेकिन you know, they say कि 40%, कई researchers कह रहे हैं, because mind is so unique, every human mind is unique, we can't really say for sure, but कुछ researchers कह रहे हैं कि 40% हमारी productivity में dip आता है due to multitasking. क्यों ये आता है? What happens when we are multitasking is that गोल शिफ्टिंग हो रही है. हर टास्क का एक गोल है, ये अचीव करना है. सो व्हेन वी गो बिटवीन टास्क्स, हमारे गोल शिफ्ट हो रहे होते हैं. फिर देयर आर डिफरेंट रोल्स दैट वी प्ले इन डिफरेंट टास्क्स. आई एम डूइंग माय वर्क एट ऑफिस एंड माय चाइल्ड कॉल्स, सो आई पिक अप द फोन, मेरा रोल चेंज हो जाएगा, मेरा गोल चेंज हो जाएगा, राइट? सो बिकॉज ऑफ दैट उसके रिपरकशंस ये हैं
कि हमारी डिक्रीज अटेंशन स्पैन हो जाता है। वो एक मूवी आई थी फाइंडिंग नीमो, उसके अंदर वो डोरी एक कैरेक्टर है जो बच्चों को बहुत पसंद है, जिसकी मेमोरी कम होती है, बट मुझे कई दफा लगता है कि अगर हम बहुत देर मल्टीटास्किंग करें तो हमारे अटेंशन स्पैन उसी की तरह हो जाता है, अ फ्यू सेकेंड्स तक रहता है। एंड इट इज अ मैटर ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन टू सी कि हमारा अटेंशन स्पैन है क्या। हम सबकी अपनी एक पैरामीटर है, सो वी कैन सी विद दैट। दूसरा, मेंटल फटीग बहुत ज्यादा होती है, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिपरकशन। देखें, आपके ब्रेन के डिफरेंट साइनाप्सिस चल रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन एक्टिवेट हो रहे हैं। वी गेट मेंटल फटीग if we do a lot of multitasking, and of course less productivity ho jati hai. We become less productive because attention jab hamari, we have spread ourselves out so thin, idhar bhi attention hai, udhar bhi attention hai, so then we cannot give our best to one particular task because me is divided into 10 tasks at the same time. और बाय द वे आयशा, आपने एक और बिफोर वी केम ऑनलाइन एक पूछा था कि भाई प्रोडक्टिविटी को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर टास्क का एक अपना है, लेकिन एक बहुत पुरानी सेइंग है कि प्रोडक्टिविटी को आपने गेज करना है, मशीन की प्रोडक्टिविटी को करना है, इंसान की प्रोडक्टिविटी को करना है, तो उसका गेज है लेस इनपुट मोर आउटपुट। If we are putting the equal amount of input and equal output, that is not productivity. It has to be, that is called what is efficient way of working. So उसके अंदर input के अंदर आपका time आ सकता है, energy आ सकती है, reducing errors आ सकते हैं, that is less input, which sometimes in multitasking these things get all jumbled up. और लेकिन ऑन द अदर हैंड, अब जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं वो कहेंगे जी कि आप तो बिल्कुल ही अगेंस्ट हैं। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट अगेंस्ट मल्टीटास्किंग, बिकॉज कई दफा नीड होती है, यू नो, एट सर्टेन टाइम, बट देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। जब हमने कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है तो वी नीड अ हाइपर फोकस, लेकिन अगर हम इतने ज्यादा यूज टू हैं ऑफ मल्टीटास्किंग तो हमारे लिए एक हाइपर फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड बाय द वे, पर्सनैलिटीज की भी बात होती है। कुछ पर्सनैलिटीज हैं दैट थ्राइव ऑन मल्टीटास्किंग, बट कुछ जिसे काम के कीड़े कहा जाता है, they have such laser focus that they would do one work at a time and it would be a perfect end result to that. बिल्कुल ठीक है। सो हमने हाइपर फोकस की भी बात कर ली, मल्टीटास्किंग की भी बात कर ली, बट अगर हम डिफाइन करना चाहें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है दोनों चीजें, सो हम किस तरह डिफाइन करें? देखिए, प्रोस एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, ठीक है, बिकॉज अब एक डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, सो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि मल्टीटास्किंग अब है, नीड ऑफ द टाइम तो है, लेकिन दैट इज द बेस्ट। यू नो, वी डू नीड कंसंट्रेशन। अब मैं आपको बड़ी ऑर्डिनरी एग्जांपल देती हूँ कि रिलेशनशिप्स प्रोफेशनल वर्क नहीं है, लेकिन इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। उसके अंदर भी अगर हम मल्टीटास्किंग करेंगे तो वी विल नॉट गिव इट द इम्पोर्टेंस दैट इज इवन रिक्वायर्ड। आई एम टॉकिंग इन दैट पर्सन। सो यू नो, देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू दैट, लेकिन एक बात है कि अगर हम प्लान नहीं करते हैं ना अपना डे, अपनी लाइफ, तो we will end up into doing multitasking. On the other hand, अगर हम बहुत, if for a perfectionist person जो है वो hyper focus इतना रखते हैं अपने कि वो they lose out on a lot of small tasks that need to be done as well. So there are positives and negatives of it. Multitasking is undeniable a very efficient way to utilize time. बट एफिशिएंसी सफर्स जब हमारी अटेंशन जो है वो स्प्लिट हो जाती है। तो एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कुछ अर्सा पहले, उसके अंदर एक एक्रोनिम बनाया हुआ था ऑफ फोकस, एंड आई विल शेयर इट विद यू। आई रोट इट डाउन। फॉलो वन चैलेंज until success. F for follow, O for one. Follow one challenge until success is achieved.
So focus is how our productivity, when our productivity gets better, our performance gets better. When our performance is better, naturally we start getting recognized in the corporate world, and so on and so forth. So corporate ladder के लिए हमें focus की बहुत ज़रूरत है, despite the fact कि हमारी शायद हम ADHD personality हैं या perfectionist हैं. We need to have a laser focus at times. Yeah. बिल्कुल ठीक है. एंड कैन वी से कि फिर वी नीड टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मल्टीटास्किंग एंड हाइपर फोकस टू बी मोर प्रोडक्टिव और टू गेट थिंग्स डन? Absolutely, absolutely. And आयशा, कई दफा जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है इन वर्क प्लेसेस, घर में तो बंदा कर ही लेता है, बट एट वर्क प्लेसेस समथिंग हैपेंस इन अ फैक्ट्री. अभी at that time you need both of them together. Can you understand? You need laser focus and you need the efficiency of multitasking. You do this, you do that. Come on, let's as a team work. Especially in teamwork, it is required. Both of them are required. So, is wajah se, as you know what a real mature person is, who knows, who plans, और उसको पता है कि कब उसने कौन सी स्किल अपनी यूज अप करनी है. Whether the focus, और वो उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि वो एट अ ड्रॉप ऑफ अ हैट वो उसी वक्त अपना फोकस ले आते हैं जब नीड भी होती है. सो दैट इज अ स्किल दैट वी कैन जगल बिटवीन द टू. Definitely, and it's a good skill to have to make your life easier. हमारे पास कुछ questions भी आए हुए from people. So Sayeda Ridai Fatma पूछ रहे हैं that do you think multitasking increases the stress level and how can we overcome that? क्या नाम किन्होंने पूछा था ये? Rida. Rida, very good question. Multitasking does increase our stress levels. हम अपने ब्रेन की एफिशिएंसी को किस तरह मेजर करते हैं, उसके अंदर वेव्स होती हैं, राइट? और जितनी ये स्ट्रेसफुल वेव्स होती हैं which are created by spreading ourselves thin, तो उतने हमारे स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं. जितने थॉट्स कम होंगे उतने हमारे स्ट्रेस लेवल्स लोअर होते जाते हैं, जिसको कहा जाता है अल्फा स्टेट जो है, that is alert relaxation, and that is when our stress levels are controllable, are manageable. And I will share with you at the end of this talk of how we can take our life in control. We can multitask, but how can we actually reduce our stress levels as well? Perfect. And Aisha Faisal also has a question. जो उन्होंने पूरी हमारी actually उसका discussion का conclusion पूछ लिया है, that what's the mantra for actually striking the balance? What is the mantra? Yeah. Okay. Which is the first thing that I said, plan it out. Yeah. Plan it out. Yeah. Plan it out. एक टाइमर जो है, आजकल तो फोन पे टाइमर है, पहले तो हमें दूसरे रखने पड़ते थे अपने आप को जरा डिसिप्लिन करने के लिए. अपने फोन पे 20 मिनट टाइमर लगा लें, every 20 minutes. And on that, after when the timer buzzes, you find out कि आपने अभी multitask किया है या आपने focused approach की है. And that is also like an indication to us. आप उस वक्त फिर कहें, ओके, काफी मल्टीटास्किंग हो गई, मैंने 4 ईमेल्स भी देख ली, फ्रेंड ने जो एक जोक भेजा है व्हाट्सएप पे वो भी देख लिया, अभी वो चाय के लिए बुला के आए हैं, उनसे भी बात कर ली. बट नाउ इज द टाइम, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिमाइंडर टू योरसेल्फ, द टाइम, ओके ज़ॉफी, time for me to focus right now, right here, for the next 20 minutes. I'm not going to be looking at or doing anything else. ये बड़े देर से और डेडलाइन करीब आ रही है. I really need to do that. Yeah. I hope that answers. Yeah, definitely. And moving forward, हमने बात के लिए बहुत सारी काम की, किस तरह से जगल करें, किस तरह से प्रोडक्टिविटी करें. So productivity की ही अगर हम बात करें, does taking time off also increases productivity or helps us in some way to increase our productivity? Sorry, आयशा थोड़ा सा दोबारा रिपीट करें. जी, मैं कह रही हूँ कि productivity जो है, does it increases if we take time off from our regular work? Absolutely. उसकी मैं पहले, before I answer the question,
आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि अभी आप अपने लैपटॉप के ऊपर 50 वेब पेजेस खोल लें, 10 वर्ड फाइल खोल लें, एक्सेल की 5-6 खोल लें, आप देखेंगे कि एफिशिएंसी एक मशीन की जिसको बहुत ज्यादा सोच समझ के किया गया है वो कम हो जाती है. सो व्हाट डू वी डू व्हेन हमारा स्लो हो जाता है सिस्टम? हम रीबूट करते हैं ना, मतलब सब कुछ क्लोज करके रीबूट कर देते हैं. सो मी टाइम इज द बेस्ट थिंग एनी पर्सन कैन डू. अब लोग कहते हैं, लोग मी टाइम पता है कब लेते हैं? साल के बाद. ओ छुट्टी, वो अब टाइम आ गया है हमारी वेकेशन का, लीव का, तो अब हम जाते हैं. Oh no, it's too late. Already जो है ना शॉर्ट सर्किट हो गया होता है हमारा ब्रेन. We need me time. वो वाला भी अच्छा है. एवरी एंड ऑफ एवरी मंथ हम कहीं बाहर अगर चले जाएं, बाहर से मुराद है करीबी कहीं टेक अ ब्रेक, या साल की जो छुट्टी है वो भी अच्छी है. बट एवरी डे वी नीड आवर मी टाइम. In fact, guys, all of you watching, एक हमारा YouTube चैनल है Zaufyshan Haseeb. उसके अंदर हसीब ने अभी मी टाइम पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है. Because he went on his me time, he was in Karachi for BizDev, and he went on a me time for 3 weeks at on the beach. वहाँ एक हट लेके, and he wanted to share his experiences. Me time rejuvenate करता है. It relaxes your mind, it brings back the focus जो हम lose कर चुके हुए होते हैं. आपने ये देखा होगा कि when we come back from a holiday, हम काम के ऊपर इतने अच्छे और efficient हो रहे होते हैं. So इसी तरह दिन में भी हमें थोड़ा सा निकाल के me time करना बहुत जरूरी है, to relax our brain, to relax our mind, to relax our body, and to bring back the focus. And me time में सोना, क्या क्या चीजें मी टाइम में होती हैं और क्या क्या नहीं होती हैं. मी टाइम इज नॉट ऑन द स्क्रीन. मी टाइम इज नॉट स्लीपिंग और टेकिंग अ शावर और कुकिंग जो यूजुअल है. मी टाइम इज जस्ट me, myself, and I doing things that I love. I mean, enjoying, just sitting, maybe even meditating. That is me time. Exercising is me time. Excuse me. Hobbies is me time. I love gardening. मेरा me time होता है कि मैं gardening करूं. I love to grow things, and उसकी वजह से, so doing things that only you or I love doing, that is me time. It really refreshes your mind. So take out some time. मत ये कहिए कि मेरे पास time नहीं है. मेरे I have my office, I go late, I'm working from home, there are projects, etc., etc. I have to help kids with the homework. No. First, you do your me time. You'll have better focus at all the things that you do. Right? Definitely. Yeah, definitely. And I think ये बहुत अच्छी strategy है for people कि they take out time, because every time I have experienced this, like I take out time for myself, my energy increases many times. And that's something that has really helped me also throughout my professional life and personal life also. So हमारे पास एक और क्वेश्चन है आयशा फैसल का ही, जो पूछ रही है that how can an individual attain alpha state of mind? अल्फा स्टेट जो है वो आप मेडिटेशन अगर मंथ्स एंड इयर्स, लेकिन कहीं तो शुरू करना है. इयर्स ऑफ मेडिटेशन से आप अल्फा स्टेट को बहुत अच्छे तरीके से ऑन योर बैक एंड कॉल ला सकते हैं. मगर बेस्ट चीज है, एंड आई शेयर विद यू, आयशा, ये आयशा ही है जिन्होंने पूछा है बाय द वे क्वेश्चन. जी आयशा. आयशा, जस्ट you have to concentrate on your breathing, nothing else. लोग समझते हैं मेडिटेशन में पता नहीं क्या है, कोई मंत्र है, कोई और है, ये करना है, वो करना है. You just sit with your spine straight and you concentrate on your breathing. You can close your eyes, you can open your eyes. All you do is breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. और उसी पे ही फोकस रखना है. जब फोकस चला जाए वापस ले आए. Breathe in and breathe out. You keep doing that, you reach an alpha state, because
oxygen going to our lungs and to our brain, refreshes us, but this calm breathing calms down our mind as well. So it is a best marriage of alert relaxation. बिल्कुल ठीक है. आई होप आयशा फैसल का जो क्वेश्चन है वो आंसर हो गया होगा. मूविंग फॉरवर्ड, हमने जैसे फोकस की अभी बात की गई, टू फोकस टू अचीव एन अल्फा स्टेट. सो हम लोग, द वर्ल्ड वी आर लिविंग इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस राइट नाउ. हम सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, हमें बहुत सारी न्यूज आ रही होती है, द पीपल अराउंड अस आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, तो हम उसे देख रहे होते हैं. सो does it help, मतलब इस पूरी डिस्ट्रैक्शन को एक तो खत्म किस तरह करनी है, and how does information overload impacts us? आपने देखा ही है आजकल के बच्चे, फॉर ऑल हु आर मैरिड देयर एंड फॉर ऑल वाचिंग हु हैव टीनेज किड्स, you see how stressed out your kids are, and they don't even realize, some of them do realize, but they are so high strung and stressed out is because of the information overload that is there. And poor things, they are born with it. तो वो मतलब ऐसे लगता है जैसे मोबाइल फोन हाथ में ही लेके पैदा हुए हैं बच्चे. But poor things, what can they do? So all this is actually stressing them out. उसके ऊपर एक और ना सिर्फ the youngsters की बात कर रही हूँ, but adults की बात कर लें. And you know, I'll give example of the situation of COVID. Yeah. जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन आ गई, अभी मेरी एक बात हुई, a friend of mine, he just got tested positive for COVID. उसके physical symptoms तो बिल्कुल भी ज्यादा नहीं थे, एसिम्प्टोमेटिक की तरह ही था, सिर्फ पॉजिटिव आया था. लेकिन इतना ज्यादा उसको मेंटल इम्पैक्ट उसका हुआ है that you know he's gone into a deep depression. And I was, you know what my request to him was, and also to my husband Haseeb, because जब ये नया नया शुरू हुआ था, 1 साल हो गया है, I got all the information, I keep myself safe, but I don't open every information on each and every WhatsApp group that ये है. इंडिया में इतने लोग मर गए भाई, very sorry to hear that, but I don't need to get that kind of negativity into my life today. I can't let it affect my mind. And that is the thing we need to remember. Not every message has to be opened. Not every repost has to be read out. ये डिसीजन सिर्फ हम ही ले सकते हैं. बच्चे अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं, उनको कहेंगे भी तो वो मानेंगे नहीं. But we can have a discussion with them so that to get those stresses out. You know, so rather than just going blindly with whatever is being posted, we need to have a cut-off time. और जो मेरी final recommendation मैंने लिखी है, उसके अंदर भी ये कहा है कि कुछ देर तो भाई, आजकल तो खाने के टेबल पे भी, I've been to हाउस डिनर्स जहाँ सबके मोबाइल फोन ले लिए जाते हैं, बट हमारे घरों में बच्चे फिर भी फोन पे होते हैं. सो उसको कोई टाइम एक रख लें दिन का कि वी आर नॉट, या अपना ही खुद ही अपने आप का ही एक रख लें कि फॉर 20 minutes in the morning I'm not going to pick up my phone, and 20 at night. And एक मैं अटेंड कर रही थी ट्रेनिंग बाय जिम क्विक, एक है माइंड वैली पे, वो करता है. तो वो कहता है कि हमारा दिन क्यों अच्छा गुजरता नहीं है, why are we not happy, कि the moment our eyes open we go to the screen. और उसने एक घंटे का रिचुअल बताया है मॉर्निंग का, जिसके अंदर 1 घंटे तक आपको फोन नहीं देखना है. वो कहता है कि अलार्म क्लॉक ले लें ताकि आप फोन पे डिपेंडेंट भी ना रहें अलार्म पे बजने के लिए. डोंट लुक एट योर फोन, go to the bathroom, do some exercise, have a healthy breakfast, meditate, write down, journaling करें, and फिर 1 घंटा जब गुजर जाए तो फिर फोन की तरफ आप आएं या टीवी की तरफ आप आएं. क्यों? क्योंकि जो पहला मैसेज हम देखेंगे ना, वो हमारे पूरे दिन को इम्पैक्ट कर देगा. It will bring our stress. सुबह स्ट्रेस लेवल स्टार्ट होता है, स्काई रॉकेट चला जाता है, और फिर सारा दिन उसके अंदर वो स्नोबॉल इफेक्ट ही होता जाता है. So we need to be our own doctor and have a cut of time for screens, etc. बिल्कुल, डेफिनेटली. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस, ताकि हम अपनी जिंदगियों में बैलेंस ला सकें, एंड वी कैन बी मोर focused on the works that actually are important to us.
and then definitely our families and our personal lives also. Coming towards our last question, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या strategies हो सकती हैं that people need to employ to survive and focus and thrive in post-COVID, because COVID के साथ बहुत सारी distractions आ रही हैं. अब जैसे we see a lot of news, the world has, our routines have completely changed and it will remain the same definitely. So post-COVID world के लिए क्या strategies हो सकती हैं? क्योंकि रूटीन्स चेंज हो गई हैं, तो फिर आपको एक नई रूटीन बनानी है, अपनी रूटीन बनानी है. एंड whether it's for business people or it is for the corporate professionals, etc., we have to make our own routine. Or I can't emphasize importance of planning in that as well. Work from home है, आप तैयार हो, आप ये ना सोचें कि मैं वीडियो ऑफ करके जैसे मर्जी कपड़े पहने होंगे ऑफिस वालों से सारा दिन मैं उस तरह कर लूंगा. नो, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ओन डिसिप्लिन, फॉर योर ओन फोकस. मैंने आप ट्रैक पैंट्स पहन के भी एक मीटिंग अटेंड कर सकते हैं. आप देखिए आपका मेंटल स्टेट क्या होता है. और आप फॉर्मल क्लोथ्स या इनफॉर्मल क्लोथ्स बेशक पहन लें, बट स्मार्टली ड्रेस्ड अप हो तो आप मीटिंग कैसे करते हैं. Everything that we do has an impact. So हमने अपनी रूटीन्स खुद फॉर्म करनी है. मैं आजकल सोच रही थी आयशा तक, आजकल बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह नेचुरली सहरी के लिए, तो इतना प्यारा टाइम होता है उस वक्त, स्पेशली सबको उठाने से पहले जो टाइम है ना, इतना सुकून का टाइम होता है. I was just thinking that reminds me of a terminology which is called 5 o'clock club. वो कहते हैं कि आपकी फैमिली के उठने से आधा पौना घंटा पहले आप उठे, एंड देन एंजॉय दैट टाइम. और मॉर्निंग्स सुबह तो इतनी खूबसूरत होती हैं. सो हैव अ प्लान इन माइंड. जगल करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपका वर्क भी है और आपका होम टास्क भी है, तो देन यू नीड टू गेट अप, डू योर प्लानिंग इन द मॉर्निंग, हैव अ स्ट्रेट माइंड एंड देन गो बाय योर प्लान. लोग कह देते हैं, मैंने पहले कहा ना आप लिस्ट लिखिए, तो लिस्ट तो लिख ली, लेकिन लिस्ट के ऊपर एक टाइमिंग भी लिख ली. That really helps, because when you're running late in one time, then you can do things quicker, you can multitask. Or if it's a very important thing, तो आपको आ जाता है कि ये मुझे अभी करना है and I have to give my full focus, so I need to put these things on the side, etc., etc. So now is the time to recreate yourself. लोग ये नहीं समझ रहे हैं. दुनिया बदल गई है, either through COVID or through general changes in the world as well. लेकिन हम वही रहते हैं, and that is where we are doing wrong. We need to keep evolving at every step. वो एक पुरानी saying है ना आयशा के, जो species दुनिया से obsolete हो गई, वो नहीं थी जो सबसे strongest नहीं थी या weakest थी. Obsolete वो हुई जो बहुत strong थी, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को adapt नहीं किया to the newest environment as the environment was changing. So for that particular reason, we need to keep recreating ourselves. चले, कल अच्छा नहीं गुजरा, आज दोबारा try करते हैं. We should not go in that negative. सबसे पहले आपने कहा है strategies क्या हैं, which I have also written down a few. और सबसे पहले ये है कि आप believe in yourself, have faith in yourself. Don't go into negative thinking. Positive, ये COVID के लिए the word negative is good. Mind के लिए negative word is not good at all. Get rid of negativity. Consciously get rid of your negativity. The chatter in your brain which is telling you all the time that you are no good, you can't do this, कल क्या हो गया, उससे ऐसे क्यों कहा. Forget about that. Put a stop to negativity. That is the first thing that we need to do. फिर ये है कि पुरानी हैबिट्स को रोकने में टाइम तो लगेगा, लेकिन 2-3 टॉप प्रायोरिटीज टास्क अपने दिन के कर लिया है जो सबसे टॉप है, एंड स्टार्ट डूइंग दोज फर्स्ट. एंड यू विल सी कि जब आपको वो वाले टास्क कर लेंगे ना, देखिए एक तराजू पकड़ ले, एक तरफ 15 टास्क हैं छोटे छोटे टास्क जो टिक मार्क कर लिए, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, एंड 2-3 बड़े टास्क हैं. इन दोनों में से आपको ज्यादा जो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगी?
छोटे छोटे 1000 टास्क में या 2 मेजर टास्क में इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आ रहा है. सो लिस्ट डाउन 2 और 3, प्रायोरिटाइज योर 3 टॉप टास्क. फिर अपने या तो फोन के कैलेंडर में या किसी एक पेपर पे मार्क कर लें उनके टाइमिंग्स. एज आई सेड, अपना फोन अगर बंद नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट आपको डर लगा रहता है कि कोई ना कोई कॉल ना कहीं से आ जाए, तो कोई सॉफ्टवेयर कर लें जो सोशल मीडिया को. ऑफिसेज, आई नो ऑफ अ लॉट ऑफ ऑफिसेज दैट हैव सॉफ्टवेयर ऐसा वो करते हैं जो ब्लॉक करता है सोशल मीडिया को. ये बात नहीं है कि लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनकी हेल्प की जा रही है ताकि वो डिस्ट्रैक्शन से दूर किया जा सके. सो if you don't have the discipline yourself, then you can have a software that blocks social media. हर मैसेज रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, हर कॉल उठाने की जरूरत नहीं है. when you are on a roll especially, वो ब्रेक हो जाता है, मोमेंटम, मोशन जो है वो टूट जाता है. Every now and then close your eyes and just breathe. 2-3 breaths वो आपको वापस फोकस में लेके आता है. अब मैंने पहले कहा था, रिकमेंड किया था कि एक टाइमर लगा लें, 20 मिनट टाइमर, जो थोड़ी देर बाद आपको एक तो ब्रीदिंग का बताए, एक आपको कहे कि यू नो व्हेन रमजान इज ओवर हैव सम वाटर, ट्राई टू रिलैक्स, स्टार्ट, टेक अ फ्रेश स्टार्ट. कुर्सी से उठ के थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया. I mean, you know, little bit of stretching here, kursi pe baithe hue. This also really helps. It is a pattern break. Whether it's a pattern के हमें आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, pattern break है, और फिर उससे mood break होता है. हल्का सा क्लासिकल म्यूजिक पीछे लगा लिया करें. कुछ लोग काम रॉक म्यूजिक पे करते हैं, मेरा तो टेंशन बिल्कुल हट जाती है. सो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक आप देखें कि क्या स्ट्रैटेजीज आपको करनी है. ऑन अ रूटीन, देखिए, अगर आज आप अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम करना चाह रहे हैं, आप बेटर वर्क करना चाह रहे हैं, तो एकदम से नहीं हो जाएगा. फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट मेडिटेटिंग एवरी डे. जैसे मैंने कहा ना, मी टाइम, जितना इंपॉर्टेंट मी टाइम है उतना इंपॉर्टेंट मेडिटेशन है. कुछ बहुत अच्छी एप्स हैं, अगर आप वो दिन में 3 से 5 मिनट मेडिटेट कर लें. एक ऐप है headspace.com, एक और है calm, CALM, calm. ये दोनों आप हर रोज अगर 3-3 मिनट मेडिटेट करेंगे ना, स्टार्ट विथ 3 मिनट्स, देन गो टू 5 मिनट्स, और काफी देर तक 5 मिनट मेडिटेशन करते रहें. वो आज आपके स्ट्रेस लेवल्स को नीचे नहीं करेगा, बट यू आर मेकिंग श्योर दैट कल परसों जो स्ट्रेस होगा उसको आपको हैंडल करने का ज्यादा अच्छी पावर मिल जाए. यू गेट मी? सो स्टार्ट मेडिटेटिंग टुडे, नॉट फॉर टुडे. आज तो आपसे सही मेडिटेट भी नहीं हुआ जाएगा, बिकॉज यूज्ड टू नहीं होते हम, लेकिन कल के लिए, परसों के लिए आप आज मेडिटेट करना शुरू कर दें, so that you are better equipped to handle different stresses. Multitasking और laser focus या sharp focus या monotasking के between balance करें. अगर कोई situation ऐसी है कि आपको मल्टीटास्किंग करनी है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको अपनी हैबिट मत बना लें. You have to have what is better. Focus is always better. And we, you know, हमारा जो ब्रेन है वो एक सुपर कंप्यूटर है, मगर हम कंप्यूटर लेते हैं, बॉक्स खोलते हैं, उसके अंदर बहुत अच्छा मैनुअल आता है. अनफॉर्चुनेटली इस सुपर कंप्यूटर का कोई मैनुअल नहीं आया है, लेकिन हम इसके प्रोग्रामर बन सकते हैं. वी कैन प्रोग्राम आवर माइंड. यू नो, वो एक मैं पढ़ी थी, डिफरेंट माइथोलॉजीज हैं, तो वेदांता ट्रीटीज एक बुक है, उसके अंदर उन्होंने माइंड को एक सरपट घोड़े की तरह किया गया है कि यूजुअली हमारा माइंड जो है, इट इज लाइक अ हॉर्स व्हिच इज रनिंग वाइल्ड. या आप सोच लें कि इसको मंकी ब्रेन भी कहा जाता है. मंकी ब्रेन का ये मतलब है कि जैसे मंकी है हमारे दिमाग में और वो इधर से खींच रहा है, उधर से खींच रहा है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी कैन रीप्रोग्राम आवर माइंड्स, provided we are thinking along those lines. अभी हमारा mind controls us, but we need to control our mind. We can talk to our mind rather than listen to our mind. जो mind के अंदर chatter होती है वो हमेशा negative nature की होती है. So उसको कई दफा shut up कराना भी हमारी responsibility है कि you know, and talk to your mind
and use affirmations and use positivity. Trust me, you have more power than you know. In the in the down and the dumps when you are, always remember, have faith that you have more power than you know. Just take over that power and have faith in yourself and have belief in yourself. बिल्कुल ठीक है. So Zaufyshan, I think this was an amazing session. हम लोगों ने बहुत सारी amazing चीजें सीखी and definitely there are a lot of things that I need to improve my life. I think हमारे viewers के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं to just include them in their life and make their lives more better and productive. Thank you so much for taking out the time and coming here to talk about all these things and sharing your insights and vision on this thing. हमें बहुत अच्छा लगा एंड इंशाल्लाह हम लोग आपको फ्यूचर में भी इसी तरह बुलाते रहेंगे ताकि हम आपकी जो भी लर्निंग्स हैं, जो इनसाइट्स हैं, उससे हम लोग जो है फैसिलिटेट होते रहे, बेनिफिट लेते रहे. Thank you so much, Aisha. No, I just wanted to thank all the viewers as well, and to you, Aisha. Thank you for inviting me. It's always a pleasure to share my views, and thank you for the questions everybody put there. And in where you've put questions, अगर बाद में भी कोई questions आपके ज़हन में आए, तो आप please लिख दीजिएगा. I will surely respond to you, and I'll put a link to the me time video. वो ज़रूर देखिएगा. That will also help you. Sorry, Aisha. नहीं एंड वही बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आपने बताई एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वीडियो आल्सो कि देखें क्या चीज जो है उसमें हमें पता लगती है. और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन एंड वील इंशाल्लाह कंटिन्यू विद मोर सेशंस. हमारे व्यूअर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमारे साथ दिया, हु पुट अप ऑल द क्वेश्चंस एंड हु आर वाचिंग राइट नाउ. थैंक यू सो मच. बाय. Hafiz, Zaufyshan. Bye. Allah Hafiz. Ramadan Kareem. Ramzan Kareem to you.